Hi everyone, so you are coming with the video of personal makeup vanity and I will tell you कि आपको अपनी personal makeup vanity में किन किन products को add करना है. उसके अलावा before this you have to clear theory details and after this I will share every product with you and आपको एक एक प्रोडक्ट दिखाया जाएगा ताकि आप लोग उसको अपनी पर्सनल वैनिटी में इंक्लूड कर सकें. So let's just get started. Before this, you can take screenshot of it ताकि आप इसको अपने notes में maintain कर पाएं. First thing you required in your vanity that is CTM. And जिन लोगों ने CTM का वीडियो नहीं देखा है वो CTM देख सकते हैं कि CTM क्या होता है. CTM is cleansing, toning and moisturizing. So we have cleansers. You can use Garnier का micellar water. I already tell you. इसके अलावा इसका एक पिंक वाला वर्जन भी आता है. यू कैन यूज इट इफ तो आप हैवी मेकअप वेयर नहीं करते हैं एंड डेली वाइज अपने खुद के पर्पज से आपको यूज करना है, सो यू कैन यूज पिंक वाला भी. एंड नेक्स्ट वन यू रिक्वायर्ड टोनर. यू कैन यूज नॉर्मल रोज वाटर एंड वी हैव एस्ट्रिंजेंट. आई ऑलरेडी टोल्ड यू एंटीबैक्टीरियल होता है, बट यू कैन यूज नॉर्मल रोज वाटर जो भी आपको मार्केट में डिसेंट ब्रांड अवेलेबल हो जाए. उसके अलावा यू नीड मॉइस्चराइजर. यू कैन ऑप्ट बायोटिक. पर्सनल यूज के लिए लेना चाहते हो यू कैन ऑप्ट इमोलिन क्रीम 2. सीटीएम के वीडियो में मैंने आपको बता रखा है. एंड देन प्राइमर. यू नीड प्राइमर अकॉर्डिंग टू योर स्किन. इफ तो यू हैव नॉर्मल स्किन, कॉम्बिनेशन स्किन और acne prone oily skin, you have to use this. It's a mattifying primer, Ace of Base Recode का. ये ले लो, it's very good for you. And if you have hyper dry skin, you have to use PAC का oil primer. अगर तो hyper dry skin है, you can buy this. Next thing you require that is D30 Mini Derma and D5 Mini Derma Color Corrector, okay? And it is from the palette Derma Krylon. D30 you need for color correcting and D5 you need to neutralize the color corrector, okay? And जिन लोगों को अभी आइडिया नहीं लग रहा है they can watch our color correcting theory video जिसमें मैंने डिटेल्स दिया था कि आपको कैसे कैसे इन कलर करेक्टर को यूज करना है. ओके, एज पर योर स्किन रिक्वायरमेंट आप उस अकॉर्डिंगली कलर करेक्टर ले सकते हैं और ये छोटे छोटे मिनी मिनी आपको मार्केट्स में मिल जाएंगे, सिंगल पीस भी. उसके अलावा नेक्स्ट वन यू नीड दैट इज फॉरएवर 52 कंसीलर. एंड कंसीलर हमेशा 2 शेड लाइटर टू योर स्किन टोन होना चाहिए. इफ तो आपकी मीडियम काइंड ऑफ स्किन टोन है यू कैन ऑप्ट CV001 फॉरएवर 52 का. एंड इफ आपका डस्की की तरफ थोड़ा टोन जा रहा है देन यू कैन यूज CV003 शेड. Next thing you need in your vanity that is foundation according to your skin tone. Okay, we have 3 brands that is MAC, NARS and Forever 52 Pro Artist. MAC में if तो आपकी skin oily है it's very good for you, but if आपकी skin dry है do not ever buy MAC for your skin because ये आपकी skin के लिए नहीं है. Mattify foundation है ये. if तो आपकी skin dry है you can buy NARS. फॉरएवर 52 प्रो आर्टिस्ट ऑल स्किन टाइप है, आप इसमें ले सकते हो, अफोर्डेबल ब्रांड भी है. बट मैक और नार्स भी आप ऑप्ट कर सकते हो अपनी स्किन अकॉर्डिंग. एंड यू डोंट नीड टू बाय ऑल 3 शेड्स लाइट, मीडियम, फेयर, मीडियम एंड डस्की. यू जस्ट नीड योर स्किन टोन. कोई भी ब्रांड ऑप्ट करो अपनी स्किन टोन का, कोई भी फाउंडेशन जो आपको सुटेबल लग रहा है, दैट यू नीड फेयर, you need medium or dusky, you can opt that particular foundation according to your skin type. So next thing you need in your vanity that is TL, translucent powder, and you can buy PAC ka mini shade number 02. Okay, it's transparent. ये सभी तरह के फाउंडेशंस पे जा सकता है. उसके अलावा नेक्स्ट थिंग दैट इज आई शेडो पैलेट. यू विल गेट ब्लशर, ब्रॉन्जर, हाईलाइटर एंड पाउडर ब्रो फिलर इटसेल्फ. ये आपको पूरी आई शेडो के पैलेट में ही मिल जाएगा. अभी मार्केट में लॉन्च हुआ है यू कैन बी का प्रिटी ऑल सेट 2. आई हैव यू कैन बी प्रिटी ऑल सेट 1 बट यू कैन बाय यू कैन बी का प्रिटी ऑल सेट 2.
इट्स अ वेरी गुड पैलेट. आई विल शो यू कि इसके अंदर कौन कौन सा शेड आपको मिल जाएगा. ये थोड़ा सा फंकी शेड्स. And it's a bronzer. You have brow filler, blusher, highlighter. Okay, and glitters भी आपको मिल जाएंगे. There is also nude kind of shades too. So ये perfect है आपके लिए, आप ले सकते हो. If you want to go for this, सब कुछ एक ही पैलेट में मिल जाएगा. उसके अलावा if you are lashes lover, you want to put lashes for functions, तो आप लोग lashes के लिए you need lash glue. If you want, अगर आप चाहते हो तो you can buy this PAC का ट्रांसपेरेंट ही लेना. और लैशेस आप बॉम्बे वैनिटी का ले सकते हो. उसमें जो 5-6 पेयर्स का आता है वो वाला, थोड़ा मीडियम काइंड ऑफ जो लैशेस होते हैं वो. उसके अलावा नेक्स्ट थिंग यू नीड दैट इज मस्कारा एंड लैश कलर. And you can buy, of course, one of my favorite, that is Maybelline Colossal Mascara yellow वाला. उसके अलावा you need curler. If तो आपकी lashes big हैं, then you don't need lashes to fix. इसके अलावा next thing you require, that is lipper, and you can buy Maybelline Sensational with the shade number 21. Okay, it's my personal favorite. ऐसा नहीं है कि सबकी यही favorite हो. इसके अलावा यू कैन ऐड, इफ तो आप चाहते हो कि फॉर लॉन्ग रन फॉर 3 years यू डोंट नीड एनी काइंड ऑफ लिपर एंड यू वांट एवरी शेड इन योर वैनिटी, सो यू हैव टू गो विद दिस पैलेट. ओके, you can buy this. You can make any shade from this palette, and it's a recode 18 color lip palette. For 3 years you don't need to buy any shade. आप इसी के साथ जा सकते हो. It's a long wear. Okay, प्रोफेशनल पैलेट है. यू कैन बाय दिस. उसके अलावा यू नीड मेकअप फिक्सर. मेकअप फिक्सर यू कैन बाय PAC का माइक्रो फिनिश. अच्छा मेकअप फिक्सर है. मैक अकॉर्डिंग टू योर बजट आप जो भी चाहें वो खरीद सकते हैं, बट PAC इज बेस्ट इन अफोर्डेबल रेंजेस. उसके अलावा नेक्स्ट थिंग यू रिक्वायर्ड मेकअप ब्रशेस. ओके, फॉर मेकअप ब्रशेस आई नीड टू शो यू समथिंग. So for brushes, I need to show you something, and that is this. You required eyebrow brush, eyebrow filler, spoolie with it, and you need a liner brush. You need a concealer brush. You can opt the brand Pro Art. It's a very good brand. Baki, you need 3 eyeshadow brushes. एक फ्लैट एप्लीकेटर ले सकते हैं, 2 ब्लेंडिंग ब्रश. उसके अलावा 1 is more blending brush to powder locking the concealer above eyelid. You need a smudge brush under eye smudging के लिए. ये ब्रशेस आपकी आई के लिए होते हैं. ये ब्रशेस फॉर कंसीलिंग, करेक्टिंग, and this brush for liner, and this brush for eyebrow. And big brushes में you required only one is a stripling brush. You can opt any brand. I don't want कि आप 32 brushes का 35 brushes का पूरा set लें. You just need this stripling brush, fan brush, powder brush जिससे आप powder and आपका blusher दोनों apply कर सकते हैं. Third one, you need foundation applicator. Okay, just these brushes you required in your vanity for doing yours makeup only or your relatives too. So ये brushes आप किसी भी brand का opt कर सकते हैं, जिसमें आप आई brushes सिंगल भी आप खरीद सकते हैं किसी भी brand के. आप Pro Art के ले सकते हैं, आप PAC के ले सकते हैं, London Prime में जा सकते हैं. Belly के brushes सिंगल नहीं मिलते हैं, इसका पूरा पेयर मिलता है. And next thing you need, that is beauty blender and powder puff. You can opt the brand PAC. You just need these 2 beauty blender in your vanity. One is mini and one is big. Okay, to blend your foundation. And another one, that is powder puff. You can buy any small powder puff. Then there is requirement of spatula and palette. One is a spatula is this, and palette you need this.
आपको अपना कोई भी प्रोडक्ट इसी पर एक्टिवेट करके यूज करना है. If you want to do makeup like a pro, then use a spatula and palette. And the next requirement is kajal pencil, that is black, brown, and white. And you can see it's black, brown, and white. You can buy any decent brand from the market. Opt, Sweet Beauty, CVB brands. These are very good brand for kajal pencils. Next one, there is a requirement of Forever 52 Bro Gel. Okay, you can see that I already written that if you have very less growth on brows, जिस भी पर्सन को पर्सनली, सबको अपनी आईब्रोज के बारे में पता होता है, जिनको भी बहुत कम ग्रोथ है ब्रोज पे, दे कैन बाय फॉरएवर 52 का ब्रो जेल with shade GT002. It's a dark brown color. GT002 from Forever 52. Okay. Next one you need, that is Krylon Cake Liner. Okay. It's a Krylon Cake Liner. With this liner, ये एक्टिवेट होता है, थोड़ा सा रोज वाटर इसके अंदर डालना होता है. With this liner, you don't need to buy any particular brand because it has the capacity more than 12 hours. So you can buy this. It's a very good brand and ये सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट है with liners. नेक्स्ट वन यू कैन बाय ब्रश क्लिनजर. ओके, मैंने आपको ब्रशेस तो दिखा दिए कि ब्रशेस आपको ये नीड है, आप ये ब्रशेस ले सकते हो, बट इन ब्रशेस को फॉर लॉन्ग टाइम, फॉर मेनी इयर्स आप कैसे सेफ रख पाओगे? फॉर दिस यू नीड क्राइलॉन ब्रश क्लिनजर. क्राइलॉन का एक you need Krylon brush cleanser and it look like this. You can buy this Krylon brush cleanser. It will cost you round of 1100. Yeah, it will cost you round of 1000. आपको 1000 में मिल जाएगा फ्रॉम जेन्युइन स्टोर. एंड आप इसको किसी भी स्प्रे बोतल में, जैसे मैंने किया हुआ है, आप किसी भी स्प्रे बोतल में ला सकते हैं एंड यू कैन यूज इट to clean your brushes with the help of wipes. Next one, you need dry wipes and tissue roll. With these tissue rolls, you can clean your brushes, and with these dry wipes, you can do CTM. Okay, you can remove your makeup, do CTM with these dry wipes. So now आपका personal makeup vanity का वीडियो पूरा हो गया है. You get all details about your products, आपको क्या क्या products रखने चाहिए. उसके अलावा हमारे next वीडियो में you will get practical videos on makeup tutorials, but before that please complete your theory. आपको सारी theory videos complete करनी है and maintain your notes ताकि आपको upcoming videos सारी समझ आती रहे. And till then wait for our next video. Bye bye, take care everybody. मिलते हैं हमारी next tutorial videos में. Okay.